In the history of molecular biology, we'll talk about the Nobel laureates of the molecular biology. That is very interesting. The Nobel laureates of the molecular biology. So सबसे पहले जो है वो टेटम Lederberg and Beetle, they came up with the primary structure of the gene expression studies, and Friedrich Sanger, he talked about he made the basic research in the primary structure of proteins, and on the basis of their work, they were awarded the Nobel Prize. For example, Beadle and Tatum and Lederberg, they were awarded the Nobel Prize in the 1958, and Sanger, on the name of which Sanger जो है इसने जो आजकल सीक्वेंसिंग होती है, जो मतलब कि सेंगर सीक्वेंसिंग भी जिसको कहते हैं, तो उसके भी ये बानी है। ठीक है, तो उन्होंने ये सेंगर ने ही ये भी इजाद की थी। तो ये मतलब कि लेकिन इनको जो है ना वो नोबेल प्राइज दिया गया। इसी तरह जो ओकोआ है, ओकोआ एंड कॉर्नबर्ग, they were awarded the Nobel Prize in 1959 for the discovery of the mechanisms of the biological synthesis of ribonucleic acid, RNA and DNA। तो आरएनए और डीएनए की बायोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है, तो ओको एंड कॉर्नबर्ग वर अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज। इसी तरह ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज था, विच वाज द डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है दैट वाज प्रेजेंटेड एज अ रिसर्च आर्टिकल इन 1953 ऑन 25 अप्रैल 1953, इसलिए 25 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड डीएनए डे मनाया जाता है। तो वाटसन एंड क्रिक एंड मॉरिस विल्कन्स, सो ये तीन साइंटिस्ट थे, इनको मोलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसको अनकवर या आप कह लें कि उसको डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1962 के अंदर। लेकिन इन्होंने ये जो डीएनए मॉडल दिया था दैट वाज इन 1953। इसी तरह 1968 में हॉली एंड खुराना and Nirenberg were awarded for the interpretation of the genetic code and its function in the protein synthesis। So जो जेनेटिक कोडॉन है, ट्रिपलेट कोड है, या जिसको जेनेटिक कोड भी कहते हैं, तो ये तीन साइंसदान थे जिन्होंने इसको जो है वो इंटरप्रेट किया था और इसका फंक्शन बताया था, प्रोटीन के अंदर जो है इसका फंक्शन क्या है। तो इसकी बुनियाद पर इनको नोबेल इनाम जो है वो दिया गया था 68 के अंदर। इसी तरह बाल्टीमोर, डेलबेको एंड मार्टिन टैमिन, they were awarded the Nobel Prize for their discoveries in the tumor viruses and reverse transcriptase। तो इसकी डिस्कवरी की बुनियाद पर जो है वो इनको नोबेल इनाम दिया गया था 75 में, 1975। इसी तरह आर्बर, नथन्स एंड स्मिथ, they were awarded for the discovery of restriction enzyme, जो आजकल हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं फॉर जीन क्लोनिंग के अंदर, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हम ये जो मोलेकुलर सीजर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, डीएनए कट करने के लिए। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होगी मोलेकुलर जेनेटिक्स के अंदर, या मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसकी बुनियाद पर इनको 1978 के अंदर जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। इस तरह गिलबर्ट एंड सेंगर, तो ये मैं जो पहले बता रहा था, डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस इन न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये जो है वो एक सीक्वेंसिंग की तरफ जो है वो एक कदम था, जिसको हम आजकल सेंगर सीक्वेंसिंग जो कहते हैं। तो दे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द
determination of base sequences in the nucleic acid in 1980. And 1983, Barbara McClintock, she did her work in the transposable elements in the, I think, 1950s, and she was awarded the Nobel Prize in the 1983. And 1987, Altman and Ketch, they were awarded the Nobel Prize for the discovery of the catalytic properties of the RNA. So they said that RNA can be used as a catalyst that can enhance the speed of reaction or rate of reaction. इसी तरह कैरी मुल्लिस जो है उसने 1983 के अंदर जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो उसका मेथड जो है वो इन्वेंट किया था कैरी मुल्लिस ने, लेकिन आफ्टर 10 years he was awarded the Nobel Prize in the for the discovery of the polymerase chain reaction, invention of the polymerase chain reaction. इसी तरह जो है माइकल स्मिथ, he was he was awarded the Nobel Prize for the establishment of oligonucleotide based site directed mutagenesis. तो जो म्यूटेंट्स जो बनाए जाते हैं डायरेक्टेड साइट डायरेक्टेड म्यूटेंट्स जो डेवलप किए जाते हैं, तो उसकी बुनियाद पर जो है इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1993 के अंदर. Kornberg again got the Nobel Prize for his studies on the molecular basis of the eukaryotic transcription. Fire and Mello, they were awarded the Nobel Prize for the discovery of RNA interference in 2006. पता है अपना हसन ज़िया क्या होती है ये RNA interference क्या है, कोई है आइडिया आपको? सर RNA इंटरफेस में जब जीन की कटिंग करते हैं जिसमें, हाँ, इसको जो है वो जीन इसकी साइलेंसिंग की जाती है, जीन साइलेंसिंग की जाती है, RNA इंटरफेरेंस, RNAi जिसको हम कहते हैं, RNAi को इस्तेमाल करते हुए. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर में कि RNA इंटरफेरेंस क्या है और ये कैसे काम करता है. लेकिन इसको किसी जीन को नॉक डाउन करने के लिए या किसी जीन को साइलेंस करने के लिए जो है वो सप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है. फिर 2008 में जो है वो शिमोमुरा, ये एक जापानीज साइंटिस्ट था, एंड Kalfi and Seen, they were awarded the Nobel Prize for the development of green fluorescent protein. तो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर, तो इनकी वजह से जो है वो इनको जो है वो ये एनिमल्स के अंदर भी यूज़ की जाती है, प्लांट्स के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी, बहुत सारी जगह पे जो है वो जहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वहाँ पे एज अ रिपोर्टर जीन या मार्कर जीन जो है वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो इस्तेमाल की जाती है. तो इसकी वजह से इनको जो है वो नोबेल इनाम दिया गया. इसी तरह 2009 में जो है वो फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स, सो ये 3 साइंसदान थे, यूनाथ स्टीट्स एंड ये रामाकृष्णन, इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द स्टडीज ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम कैसे काम करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कैसे इन्वॉल्व है. 2012 के अंदर गॉर्डन एंड यामानाका, तो ये भी एक शेयर किया था नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मैच्योर सेल्स कैन बी रीप्रोग्राम टू बिकम प्लूरिपोटेंट. प्लूरिपोटेंट या टूटीपोटेंट सेल्स जो है वो होते हैं जो कि मजीद आगे जो है वो अपनी सेल डिवीजन जो है बड़ी तेजी से जो है वो कर सकते हैं. तो इन्होंने कहा था कि हम प्लूरिपोटेंट सेल्स जो है उनको हम रीप्रोग्राम करके उनको जो है वो दोबारा मैच्योर सेल्स को प्लूरिपोटेंट सेल्स के अंदर रीप्रोग्राम दोबारा कर सकते हैं.
اسی طرح مورڈک اینڈ سینکر، یہ ایک ٹرکش پہلا نوبل laureate تھا. تو they did this mechanistic studies on the DNA repair. ٹھیک ہے، تو یہ تین سائنسدان تھے، اس میں لنڈال اور مودرک اینڈ سینجر. تو یہ جو ٹرکش ہے اس میں سی کو جے پڑھتے ہیں، تو یہ سینجر تھا. عزیز سینجر ایک ٹرکش سائنٹسٹ تھا جس نے یہ جو ہے وہ میکینیکل اسٹڈی آف ڈی این ریپیئر، ڈی این ریپیئر جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ان کو نوبل پرائز جو دیا گیا تھا. اسی طرح آلٹر ہوٹن اینڈ رائس they were awarded for the Nobel Prize in 2020 for the discovery of the hepatitis C virus. And the latest one, genome editing, جو ہے اس کا کارپینٹیئر اور ڈوڈنا جو ہے ان کو یہ کرسپر کیس کے اوپر جو جنوم ایڈیٹنگ کے اوپر نوبل پرائز جو دیا گیا تھا. So that was all about the historical perspective and main history. آپ کہہ لیں کہ لینڈ مارکس ہیں ان molecular biology, because you can, if you don't know the history, you cannot make history, and if you know the history, you can make history as well. So اس لیے تھوڑا سا جو یہ ہسٹری ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ molecular biology کے اندر جو ہے وہ مین لینڈ مارکس جو کیا ہیں اور کن لوگوں کو جو اس کے ذریعے جو ہے وہ نوبل پرائز ذریعے جو ہے وہ آنر کیا گیا تھا.